आई वोंट से गलत जा रहा है, बट ऑब्वियसली जो मैच के क्रंच मोमेंट्स हैं, चाहे वो चेज हो चाहे हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं. एंड T20 गेम में जो हर टीम के पास वो मोमेंट्स आते हैं, सो वो कैच करना बहुत ज़रूरी है. एंड इस साल ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे कोई क्रूशल कैच आ रहा है वो छूट जा रहा है, या फिर चेजिंग में कोई बैट्समैन जब हमें एक्सेलरेट करना है वही टाइम पे आउट हो जा रहा है. सो T20 में होता है ये. एंड वही हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कि जब भी वो एक्सेलरेट करने का टाइम आता है बैटिंग में, हमारी विकेट्स चली जा रही हैं. वो जो मैं अगेन बोल रहा हूँ क्रंच मोमेंट्स हैं, उसमें हम लोग क्रम्बल कर रहे हैं एंड वो मोमेंट्स को हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं. हाँ सर, हो जाता है सर. हमारा हो गया है, 5 मैच हो गए हैं. हम लोग बैक टू बैक हार गए हैं. बट येस, ऑब्वियसली एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्समैन, वो होप कभी छोड़नी नहीं चाहिए. एंड एज यू सेड, हमारी टीम में कई एक्सपीरियंस प्लेयर हैं एंड हमारा जो होप है वो बना रहना चाहिए. एंड जितने भी आगे मैचेज़ हैं, पर्सनली आई थिंक कि हमें ग्राउंड पे जाना चाहिए एंड एक्सप्रेस करना चाहिए. एंड एवरी गेम, हर गेम को एट अ टाइम एक गेम को लेना चाहिए एंड उसमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए. एंड एज यू सेड सर, वो लूजिंग स्ट्रीक हमारा 5 मैचेस हो गए हैं एंड वो ब्रेक करना, एक्चुअली ये T20 में वो जो स्ट्रीक्स होती है, विनिंग स्ट्रीक एंड लूजिंग स्ट्रीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब जीत रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जीतते जाएँ हर गेम में हाई फोकस रख के. एंड एट द सेम टाइम जब आप हार रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो लूजिंग स्ट्रीक है उसको कैसे ब्रेक करें, जो हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ सर. आपको कहीं कहाँ पे चूक हो रही है? क्योंकि लास्ट जो 4 मैचेस थे जीतते जीतते हार गए, ऑलमोस्ट जीत गए. ये भी जीत रहे थे, साउथ टीम तो नहीं जी, तो फिर हार गया. ऐसे ही होता जा रहा है. आपको कहाँ पे वो लूपहोल कहीं पे हमें मिस्टेक पड़ रहा है? एज आई सेड बिफोर के तीनों गेम में हमें आई थिंक 9 की रन रेट चाहिए थी. एंड T20 आजकल जो हिटिंग एबिलिटीज़ है, या जैसे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, 9 की रन रेट कुछ ज़्यादा टफ होनी नहीं चाहिए. बट एज आई सेड, हमारे इन बिटवीन विकेट्स चले जा रहे हैं एंड जब हम लोग एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो टाइम पे वो हो नहीं पा रहा है. एज आई सेड, वो जब हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, जिस टाइम पे हमें एक्सेलरेट करना है, जिस टाइम पे हमें रन बना के रन रेट नीचे लेके आनी है, वो टाइम पे विकेट्स चले जा रहे हैं एंड वो जो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है. सो वो ये साल ऐसा गया है. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर जब हम लोग खेल रहे थे, ये सारे जितने मोमेंट्स थे वो हम लोग पकड़ पा रहे थे. वो सब जब भी हम लोग एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे थे, यही रियान पराग था, यही ध्रुव था, यही यशस्वी था, ऑल दीज पीपल, वो सारे मोमेंट्स हमें जीत के दे रहे थे. फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही थी, जो इस साल हमारा थोड़ा हमें एक्चुअली वो एक लैकिंग पार्ट है. सो उसकी वजह से आई फील हमें कॉस्ट कर रहे हैं मैचेस. नहीं, ऑब्वियसली जिसका हाइट ज़्यादा है उसको वो उसका एडवांटेज तो है बॉलिंग में. एंड डिपेंड करता है पिच टू पिच. कई पिचेज होती हैं जहाँ पे अगर हाइट ज़्यादा है वहाँ पे एक्चुअली वो डिसएडवांटेज हो जाता है. आई वुड से जैसे हमारे जयपुर का पिच है, वहाँ पे अगर आपकी हाइट थोड़ी नॉर्मल है तो बॉल नीचे नीचे चलता है, हिट मारनी थोड़ी टफ रहती है. यहाँ पे जैसे है, और जनरली बैंगलोर का पिच ऐसा होता नहीं है, बट ये साल ऐसा चल रहा है जहाँ पे वो बैक ऑफ लाइन जिनकी हाइट ज़्यादा है, अगर वो हिट करो तो बॉल फ्लाई हो रहा है. सो दोनों टीम में एक एक बॉलर थे और वो डिफरेंस दिखा है कि ऐसी पिच पे वो हाइट का एडवांटेज बहुत रहता है फॉर श्योर. ऑब्वियसली उसकी कमी तो खली रही है. बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है, प्लेयर है एंड एज अ बैट्समैन बहुत स्मार्ट है. सो वो तो कमी खली रही है. फर्स्ट 3 मैचेस उसने अंदर कैप्टनसी नहीं की एंड देन आफ्टर दैट अभी वापस से उसका साइड इंजरी हो गया है. ऑब्वियसली वो हमें कॉस्ट कर रहा है. ये सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, है ना, टीम को पुल डाउन कर रही हैं. बट आई वोंट से कि हमें टफ हो रहा है द बॉलिंग यूनिट, बिकॉज रियान के साथ ये आई थिंक मेरा 3rd ईयर है एंड सारे जितने भी बॉलर्स हैं, हर किसी का अपना प्लान होता है. सी कैप्टन जैसे बहुत ज़्यादा जब हमारी बॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. जो बॉलिंग के प्लान्स होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग खुद करते हैं बॉलर्स. एंड हमारी टीम में ऑलमोस्ट सारे बॉलर है, जोफ्रा है, तीक्षण है, फजल है, या फिर हैसरंग है, सब एक्सपीरियंस है, सब लोग इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती. वो अपने प्लान्स लेके आते हैं, दे ट्राई टू एग्जीक्यूट. वो समटाइम्स क्या होता है, जो कैप्टन होता है अंदर, वो फील्ड प्लेसमेंट्स बेटर लगा सकता है, उसमें हेल्प होती है. एट द सेम टाइम वो कामनेस रहती है जो एक कैप्टन कंटिन्यू कर रहा है. तो
सो एज यू सेड, येस वो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमें पुल डाउन करने के लिए, बट आई एम प्रिटी श्योर हम लोग बाउंस बैक करेंगे. एंड एज आई सेड के यहाँ से आई फील one game at a time लेना चाहिए and try to break this losing streak. Thank you guys. Yeah, well, I would probably refer to both of his last overs because his 2 overs went for 7 and he took 3 wickets in them. So I think both those overs showed the class of the guy. You know, he's a class operator, he's a world-class bowler. He is great under pressure in any format of the game. He thinks clearly and he's got great skill. I know he's known for his heavy length bowling, but he's got some great all-round skills. He mixes in those Yorkers, wide Yorkers, slower balls, and he seems to know what type of ball to bowl at the right time. So it's great having a guy like him in our side, in our squad. And part of a very strong 3-pronged attack. I thought, Bhuvi's been superb this season, and Yash was outstanding again today. That last over, I thought he showed outstanding skill and composure under pressure to repeatedly bowl Yorkers like that. So I think those 3 quicks have been great for us so far this season. They've got some more work to do, obviously, to help us in this last third of the league matches, and Hazlewood certainly leads from the front in that regard. Next question, yes. Yeah, it was really important. We've had 4 home games here. We've lost the toss each time. We know that trying to defend a target here is tough. And I think in the first 3 games, I thought our bowlers and fielding unit did outstanding work to keep us in the game as long as they did, because all 3 totals were a bit below par. So watching our guys adapt to the conditions today was really gratifying. I was really proud of the way that they batted. Dev Padikkal was sensational to score 50 of 27 balls like that without ever slogging. I thought that was a genuinely outstanding innings. We say a lot about Virat, but his 70 or 42 balls and that partnership with Dev really gave us a platform on a pitch that wasn't that easy. I didn't think. I thought that was an above par total, to be honest. So that class of batting and thinking that went into it from those guys, I thought was genuinely outstanding. So yeah, really important to get that win. Obviously our amazing supporters wanted to see some of that success. They were concerned about us here at home. We've got 3 more games here at home. That's so vitally important for us to play well in these conditions. And it was great to put on a show and for the spectators to have such a great game of cricket to watch. We were struggling at the end there when they needed 17 of 12 balls, and that the composure that the bowlers showed out there, and also that Rajat Patidar showed out there. I'm really proud of the way they held themselves under pressure. Yeah, then we have the next question. Hi. Just a word on Cric-Mate. What's been working for him this season? This is the most wickets that he's ever taken in an IPL season. But there were no wickets at home before this. They were all away. He struck first ball. So what were the changes that went behind the scenes, especially with Cric-Mate? Well, Krunal was a very important pick for us in the auction. We were targeting him. We obviously liked his all-round capabilities, but also his experience. He's experienced winning the IPL. He's experienced captaining in the IPL. He's played international cricket. He's got a good cricket head on his shoulders, and he's also got a bit of fire in his belly. And I really like that. Obviously, both brothers do. So he was an important pick for us in the auction. I think he's done some really good work with Marlowe, our spin coach.
who I think is an excellent spin bowling coach, an excellent all-round coach, actually. And I think they've had some really good conversations about some of the tactics that Krunal's employing. I'm obviously not going to go into great detail about that, but they've been working really well together, and it's great to watch him operate like that, like he did today. He's having a great season wicket-wise, and he's using all that nous and that sort of streetwise cricket knowledge that he's picked up over the years while he's been paying attention to what he does. What was your message, Anil, when it was 8 over and RR was around 100 runs, and when the time out came, what was your message to your team? Look, we always thought that we could create enough chances to take wickets out there. As I say, I didn't think the pitch was as easy as the scores have shown this evening. Even in power play, there were a lot of top edges, balls just dipping over fielders' heads or just landing just before fielders on the boundary. So I thought we were creating little half or quarter chances in power play. But they were ahead of the game after 8 overs, no doubt about that. I thought Rajat did a great job of staying calm. Also, just getting a little bit. The ball spun all match, even when the ball was getting a little bit wet. It was still holding a little. So we knew that if we used our 8 overs of spin, we could create a few chances with that and perhaps drive that run rate in the right direction for us. And also, I think to halt the momentum you were talking about, we needed a little bit of death bowling in the middle overs. So you saw a little bit of Yorker and slow ball bowling in those middle overs when the seamers got their chance. And we dragged the game back. Yeah. Yeah, let's do one last question. Quick one. Maybe if you could give an insight into what sort of conversations you had probably with the batters, given you've spoken about how this has not been an easy pitch to bat on. Is it about shot selection, or is it about selecting zones to target? Say, for example, behind square is probably better than front square when it comes to playing full shots across the line. What were the conversations like? Yeah, it's a really good question that you articulate. I'm afraid I really like giving honest answers to the press, but I also don't want to give away too much detail on the tactical game here at Chinnaswamy. As you can see, the conditions are a little bit different to the high-scoring Chinnaswamy conditions that the stadium is renowned for. So what I would say is we've got some great experience in the team, both in the overseas players and in the Indian contingent. And we've got some intelligent cricketers. So the conversations that the players were having amongst themselves, but also with DK, who not only knows this ground very well, but knows IPL cricket in great depth. I think the conversations that they've had, some of the input from DK, some of the input and leadership from Virat has been really high quality. So those conversations they've had have been high quality. I'd like to give you a little more detail, but maybe at the end of the season. Yeah. Thanks so much for your All right. time.